Hi friends, once again welcome back to my YouTube channel. It's Smiling Tycoon. I'm coming after a long time. I was little disturbed, little stressed up. A lot of things were going on in life, but now I'm trying to come back. I'm trying to get up. I'm sorry if I'm going to be a little slow today because my health is not supporting me. For the past few weeks, I'm going on a treatment for my throat and uh, tonsillitis and pharyngitis. So I hope you guys will adjust with me. First of all, wishing you and your family members, whoever watching this video, a very happy new year. एक साल फिर चला गया, एक साल फिर कट गया. ये साल बहुत कुछ सिखा के गया है, बहुत कुछ बता के गया है. इनफैक्ट अगर मैं आपको सच बोलूँ ना, तो this year has taught me those lessons which I could have never learned on my own. सच बोला जाए तो इस टाइम पे ऐसी चीज़ें समझ आ चुकी है ना लाइफ की, दैट इज़ वेरी नेसेसरी दैट अ पर्सन शुड नो. कब ये साल शुरू हुआ, कुछ लोग आए लाइफ में, कुछ लोग चले गए, कुछ अचीवमेंट्स की, कुछ सक्सेस मिला, कुछ फेलियर्स मिले, कुछ नए बिजनेस स्टार्ट हुए, कुछ में थोड़ा सा काम डिले होता गया. Sorry. But finally, at the end of this year has given me a lot. This year has taken a lot. I don't know how should I express that. How should I make you feel all those things? But few things that you guys should know. The first and foremost thing is 2026 has started. But start in such a way, I won't say take some stupid resolutions and all. No. देखो, resolution is something to make you yourself a big fool. देखो, resolution आप लोग ईयर के स्टार्टिंग में ही क्यों लेते हो? Resolution is something that you need to do with your own self, right? वो तो आप कभी भी ले सकते हो ना. आप जनवरी में ले सकते हो, मार्च में ले सकते हो, दिसंबर में ले सकते हो. You can take it whenever you want. Why you have to wait for the year to end and a new year to start? कि हाँ तब हम कोई resolution लेंगे and then we are going to start something new या फिर we are going to change. So that's why I won't tell you to take some stupid resolutions and all. I myself is getting up now. मैं खुद खड़ा हो रहा हूँ, अपने लिए खड़ा हो रहा हूँ. तो सबसे पहली चीज जो आप 2026 में करेंगे, that you are going to work on yourself so hard that इस दुनिया में कोई भी इंसान आपका या तो फायदा ना उठा पाए. They don't make you fool. See, I have started a new journey. 2026 में मैं पूरा पास्ट का भूल चुका हूँ अब. And I don't want to remember whatever happened, good or bad. Because देखो, अगर हम लोग पिछली चीज़ें याद रखेंगे ना, तो आप कहीं ना कहीं अटके रहोगे. मैं भी सोचता था बहुत मुश्किल होगा, बट I have somehow, because मैं जो सह रहा था ना, whatever was going through, like let it be professional, personal, interpersonal relations, official work, business work, this that, हर चीज़ में ना इंसान फंस जाता है. तो it is better कि you make your goal and it should be unidirectional. Like वहाँ से आपकी वापसी नहीं होनी चाहिए. If you are going through, because I know, I can understand, मेरे को उठने में बहुत टाइम लग रहा है. I am getting up, I'm trying to get up, but I was not able to because I was stressed up, I was distressed, I was like itna mental torture and all those things na, life, business, work, future and all those stuffs. Finally I thought कि इन सब चीज़ों में क्या हो रहा है ना, I am degrading myself. मेरी health degrade हो रही है, मेरी mental health degrade हो रही है. तो finally after so long I came up on my legs and I stood by myself कि नहीं यार, it's enough now. I'll not let anyone come or I will not let anyone interfere now. Sorry. अब मैंने सोच लिया that 2026 is something that a drastic change has to come. Few things that I have learned and I'll tell you also to do that. जिससे you will be in a situation where you can
or you will monitor yourself and you will groom yourself in such a way that success आपसे दूर नहीं रहेगी. सबसे पहली चीज, अगर किसी को प्यार करना है तो लव ओनली योरसेल्फ एंड वर्क फॉर योर ओन सेल्फ. गॉट इट? डोंट ट्रस्ट एनीवन इन द होल वर्ल्ड. अब आप बोलोगे देखो अगर आप ट्रस्ट नहीं करेंगे तो हाउ विल द वर्ल्ड वर्क, हाउ विल द दुनिया रुक जाएगी, कोई किसी पे भरोसा नहीं करेगा, हाउ विल द वर्ल्ड गो ऑन. ट्रस्ट योर ओन फैमिली मेंबर्स. इफ यू डोंट हैव योर ओन फैमिली मेंबर्स, लीव इट, अकेले रहो. बी अलोन एंड वर्क फॉर योर ओन सेल्फ. डोंट बॉदर. आज के बाद तो बिल्कुल भी नहीं. ये प्रण ले लो 2026 में that this year you have to change yourself drastically, because since my college days, or I'll say after college days, I trusted so many people. I'll just tell you that I don't want to get into my past. I have moved on. I have left everything from my past. Just get up, work for your own self, work for your own family. If you're alone, be alone. Leave the other people, don't even think about them, don't even bother about them. Got it? Because the need of the hour finally is, कोई आपको कभी भी छोड़ के चला जाएगा. You will be alone at that particular time. So अगर आप कमाओगे नहीं, if you're not going to work for your own self, you will not be able to stand up and get up again. I hope it's very clear with you guys. So I'll request you, जितना हो सके ना अपने काम को टाइम दो. डोंट इवन वेस्ट. देखो मैं ये नहीं बोल रहा डोंट डू एंजॉयमेंट्स एंड ऑल. आप एंजॉय करो, घूमो फिरो, बट योर फर्स्ट एंड द लास्ट प्रायोरिटी until unless you are totally settled, it should be your own work, your goals, your destination. It should be having nothing with roaming around, going here and there, just wasting your money. देखो अगर पैसे कमाना आसान होता ना तो हर कोई कमा लेता. But the only thing what I'm trying to say is work hard, earns a lot of amount of money that आप सोचने में मजबूर हो जाओ कि where should I spend my money, इतना कमाया है. And mark my words, अगर आप किसी के ऊपर पैसा खर्च कर रहे हो ना, so you are investing your time, your blood, your sweat, everything on that particular person. So first try to do it for your own self, then do for your family. And if you are having no one in your life, be least bothered and do everything for yourself. खुद घूमो फिरो, सब कुछ करो. Sorry. So I hope मेरा एक छोटा सा मैसेज इस न्यू ईयर की जर्नी पे क्लियर है. I am going to work for my own self. The business that I have started, the new businesses that I have started this year, I am going to start on my own. I have started it. With this new year, a lot of things are going to change, and I hope those drastic changes helps improve me, my health, my condition, and everything. I will be putting up some videos in the upcoming days that I'm sure you guys will have that motivation that you need to do something in your life. Got it? And I promise hereafter मैं YouTube पे, Insta पे, I'll be sharing you my IDs. If you want, you can just follow my Insta ID and you can get a motivation from there. देखो उड़ने मत लगना कि हाँ if some person is at that particular place मेरे को भी वहाँ एक दिन में पहुँचना है. See, overnight कुछ नहीं होता है. If you think Tata, Ambani's, Birlas, they have turned themselves into billionaires and multi-millionaires in night, तो ये आपकी गलत सोच है. Nothing happens overnight. So it's your duty, rather it's your prime duty right now to work for your goal, to be that person who has to be invested in herself, his or herself. Don't bother about the world. भाड़ में जाए सब छोड़ दो, अपने लिए काम करो यार. If you're not going to work for your own self, कोई आपको बैठा के नहीं खिलाने वाला है. काम करो, भाड़ में जाए दुनिया, सब कुछ छोड़ दो. ये 2026 को ये एम मान के चल लो कि इफ यू आर नॉट गोइंग टू वर्क इन 2026, 2027 होप भी मत करना कि कुछ बदलेगा. देखो साल जाते रहेंगे until unless you're going to change. I don't think so you are going to do something innovative कि इस साल नहीं किया तो next year you will do something. ऐसा नहीं होता. इसलिए मेरा बस ये रिक्वेस्ट है. आई वॉन्टेड टू पुट दिस वीडियो ऑन 31st December बट माई हेल्थ वॉज टोटली ऑफ. आई कुड नॉट इवन स्पीक. मेरे मुंह से शब्द नहीं निकल रहे थे उस टाइम पे. बट नाउ इट्स एनफ. मेंटेन योर हेल्थ, कॉन्सेंट्रेट ऑन योर ओन सेल्फ, कॉन्सेंट्रेट ऑन योर गोल्स, ऑन योर डेस्टिनेशन,
where you have to reach finally. That's what I wanted to make this video, कि अपने बारे में सोचो यार थोड़ा बहुत, because I was a person, I was least bothered about myself. I used to think about others, but no, think about yourself. Make yourself something कि हाँ लगे कि 2026 में मैंने अपने आप को चेंज किया है. किसी और के लिए मत करो, अपने लिए करो. सॉरी, बिकॉज मैंने ये जान लिया है 2026 में मैं अपना सब पास छोड़ छाड़ के अब मैंने अपना जो भी नया स्टार्ट किया, माई जॉब, माई बिजनेस, माई वर्क, माई ट्रेडिंग, वट एवर इट इज, आई एम गोइंग टू गिव माई सेल्फ इनटू दैट. मैंने बहुत कोशिश की अपने आप को संभालने की, अपनी लाइफ को ट्रैक पे लाने की, बट आई वॉज फेलिंग. सो आई डोंट वॉन्ट यू गाइज टू हैव दैट पेन इन योर लाइफ कि आप अपने प्रोफेशन से, अपने वर्क एनवायरनमेंट से, अपने डेस्टिनेशन से, अपने फाइनल गोल से भटक रहे हो. सो दैट इज व्हाई आई एम टेलिंग 2026 मेक इट एज योर ईयर, ताकि यू कैन से दैट यस 2026 वाज माय बेस्ट ईयर, एंड आई होप आई विल try my best to be with you until my last breath. I won't be able to speak much. जितना मेरे को बोलना था, कहते हैं ना समझदार को इशारा काफ़ी होता है, जितना मेरे को बोलना था उतना मैं आपको बोल चुका हूँ, जितना मेरे को समझाना था मैं समझा चुका हूँ आपको. Now it's your turn, it's your duty to take over 2026. I once again wish you, your family, a very healthy, a very safe and a very prosperous new year. Thank you so much for being an inspiring Tycoon family. I'll meet you in the upcoming videos, and from tomorrow onwards you will keep seeing a couple of videos coming to motivate you, and rather I'll say to make you something finally in 2026 and make it as your best financial personal year. Once again, last but not the least, Happy New Year. Thank you.